Hey guys, what is up? Welcome back to our channel. Welcome back to another vlog. और आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है straight from the train. We are on to a small family vacation. Like me, my dad, my mom. They are all in this. And मेरे को साइड वाला सीट मिला है. नींद तो कुछ खास हुआ नहीं है पूरे रात को क्योंकि ये ट्रेन बड़ा ही बेकार ट्रेन है. बट जो भी है. So we are going to this place called Ledo. इसमें टी गार्डन वगैरह है बहुत सारे. It is famous for tea garden and coal mine. कोल माइन. चलो जी. कोल माइन का तो पता नहीं, but tea garden for sure we will be seeing a lot. Few days we'll be staying here at our relatives' place, obviously, and must chill because you know life has been too complicated these days, especially for me. A lot of things are happening and बहुत सारी चीज़ें you know ups and downs चल रहे हैं. Downs ज़्यादा specifically, but ये छोटा सा vacation, family vacation सही है. Coming at the right time and I would say at the right place. जब पहुँच जाएंगे तो पता चलेगा. This is the first time visiting there, so I really don't know what to expect from that place, but let's hope for the best. So I've reached that place. हम लोग स्टेशन से आ गए and it's a wonderful little place, wonderful little city, village, whatever it is, mainly known for tea gardens and coal mines. अभी रास्ते से जब हम आ रहे थे तो we saw some you know coal mines बड़े बड़े. So my uncle was telling me that these are all you know, for mining and I couldn't shoot it at that time, but जैसे जैसे मेरे को टाइम मिला, मौका मिला, फिर से जाने का मौका मिला, I'll definitely show you. This is the place where my uncle is staying and we'll be staying for the next couple of days. ये सारे quarters है. And the best part is there is some ghost stories also involved in this area. I'll let you know. धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे को पता चलता है, as I get to know, I'll let you know about those ghost stories. Small little cousin will be coming from her school. And she didn't really want to go to school today because she knew I'm coming and her exams are going on, but still like somehow reluctantly she had to go to school, and she made it very clear to her parents, to my uncle and aunt, that once we are here, don't talk about school or tuition or anything. So she just wants to play her days, all the days we are staying here. My name is Ashmita Nag. Hi Ashmita. Show me around. आ गई है स्कूल से. अब उसको I mean she's gonna give me a room to I mean this whole area tour. ये क्या है? What is this? Temple house? Yes. It's your temple house? यहाँ प्रे करते हो आप? Yeah. Nice one. ये आपका क्या है? ये आपने खुद बनाया, सब्जी खुद लगाया है? Nice ones. और ये क्या है? या खेलते हो आप? अरे इससे हम ये बनाते हैं टावर. टावर बनाते हो? ये ठीक है. चलिए. GoPro. भूत वाला कमरा कौन सा है? भूत वाला कमरा? हाँ. इधर है ये. बुचू. कौन सा? ये बाइक वाला? ये नहीं. तो? अरे वो इधर. इस घर के पास के बगल में. इस घर के पास के बगल में? This one? Yes. इसमें क्या है? भूत रहता है? आदमी का बहुत हार्ड है. बेटा के लिए काम आएगा तेरा मैथ्स एग्जाम के बाद. हाथ दो. आओ. चलो. ये तेरे मैथ्स एग्जाम के बाद ये काम आएगा कल. कल मैं मजे लूँगा. कल मैं मजे लूँगा तेरे मैथ्स एग्जाम के बाद.
शाम हो चुकी है एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द फैक्ट्री टू सी हाउ टी फैक्ट्री लुक्स लाइक, क्या क्या होता है क्या नहीं होता. सो सबसे पहले आई विल शो यू दिस प्लेस. ये जो छोटा सा घर टाइप दिख रहा है ना, दिस इज़ वेयर दे वे इन दैट टी लीव्स. जो रॉ टी लीव्स आते हैं ट्रक से या जैसे भी आना हो, सो आता है यहाँ पे, उसका वेइंग होता है. एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फैक्ट्री. This place is basically used to get rid of the moisture from the leaves. So जब भी moisture ज़्यादा होता है, they will blow some hot air or whatever, and they will get the moisture out of that. See, this is the same thing that we saw here. They're getting rid of the moistures from here. ये मानना है कि उस कोने में, that place, वहाँ से रात को भूत निकलता है. एंड ही वॉक्स, ही और शी वॉक्स स्ट्रेट फ्रॉम हियर. घूमता रहता है भूत. सो दिस इज़ जस्ट वन ऑफ दोज स्टोरीज विच कैन बी रियल, आई डोंट नो. ये है तुम्हारा बर्नर. आवाज़ आ रही है, आई डोंट नो इफ़ आई एम ऑडिबल और नॉट बिकॉज देयर आर सम मशीन्स वर्किंग. दिस इज़ द बर्नर एंड ये यहाँ पे वंस यू लाइट द बर्नर, ये टरबाइन जैसा है. दैट विल, ये पंखा घूमेगा एंड जितना गर्म हवा है दैट विल स्ट्रेट गो थ्रू दैट और उसी से सूखता है. बी वेयर ऑफ दिस हुक. अगर गलती से भी लग गए, अटक गए ना, चलते चले जाओगे इसी के साथ. यहाँ आके यू नो आफ्टर गेटिंग ड्राइड, कन्वेयर बेल्ट से वो आएगा स्ट्रेट और यहाँ आके उसका डिवीज़न हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़. सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ एंड ऑल उसकी क्वालिटी वगैरह डिपेंड करती है. So that's how the division will take place. Even here you can see dust is one division, PD is one division. I think ये भी dust है. OF is one division. So that's how it is segregated from that machine. So this is packaging wala room. Go down basically, not packaging ka room or so. You know how it looks like? It looks like, I don't know, I mean, you guys have seen those show, right, in Net Geo, where they show you the behind the scenes of factories and all, how things are made. It actually looks like that. You come here, it feels like that you're in that show and you're seeing every step of it. And right, so सब कुछ सुन लिया, भूत की स्टोरी भी सुन ली, फैक्ट्री विजिट भी कर लिया, बहुत कुछ हो गया आज के दिन. ये सब भूत वाला ही इलाका है जहाँ मैं खड़ा हूँ. रात को भूत टहलता है यहाँ पे. सो whatever it is, if you have watched this video till here, please hit the like button, do share, do subscribe and wait for the next video. See you, bye bye.